Okay, so very first of all, I'm going to start your new topic that has been assigned recently to me, that is image processing. And in image processing, we will take different parts. That is, the theory part will be taken by me, where you will get the knowledge about image and what is the way and how the image can be processed through the system. Okay, and then, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and then there is some numerical part which is associated with Fourier transform and some in very few portion related to Laplace transform. So that portion will be taken by mathematical department or teacher assigned by the CSE department later on. And there is a last portion which related to the coding. So that portion will be taken by another faculty from CSE or assigned faculty from EC department. Okay, so for now or for current situation, I am taking the theory part which is related to image processing and their basic operations on image processing and what the procedure to do the image process. Okay, so to start this image processing, okay, so there are two words. Just a minute. There are two words combined to describe the topic, that is image processing. Image processing. So the two words are, first one is related to image, or first word is image and second one is processing. So the term image is very much known to all of us. Okay. Now, can anyone tell me what do you mean by image? Anyone from your end? What do you mean by image? Combination of pixels. Yes. Combination of pixels. Continuation of Combination of combination. pixels. Okay. Pixel combination. Any other? Anyone else? Anyone else? Anyone else from your end? Anyone else? Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, image is in the form of matrix, that is row and columns. Okay. So this is a matrix, combination of rows and Yes, columns. sir. So can I say this is an Yes, sir. image? No, sir. Yeah, in the binary format. Binary format. Okay. Okay. No issue. Digital image. This is a matrix. It has rows and columns, and it is represented in terms of binary format. That is 1 and 0. So can I tell you? Can I tell this Yes. is an image? No, sir. Then okay. Actually, we are thinking the complicated one. ठीक है. सिंपल अगर मैं बोलूंगा, मैं एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हूं, मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूं. इमेज क्या है? सो इमेज इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिग्नल. Understood? That is pictorial representation. You are clicking a photo. Okay. Now you are eating in a restaurant and clicking a selfie and post it to the Instagram or Facebook. So the symbol, the
pictorial representation of the signal. The signal indicates that you are in the restaurant, you are taking food, and your total image represent that signal, which is obviously pictorial formation. That means I can visualize this. Got it? Yes or no? No, sir. No, sir. देखो इमेज क्या है, मेरा चारों तरफ हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल. ओके, तो तुम्हारे मोबाइल में अभी जो मेरा ये क्लासरूम का ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इमेज. यस और नो? मोबाइल के स्क्रीन पे मेरा ये जो क्लासरूम दिख रहा है, ये जो इमेज प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, इमेज प्रोसेसिंग एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स, ये तो तुम लोगों के मोबाइल के स्क्रीन में दिख रहा है. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये एक इमेज है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं. Yes, sir. ठीक है, और इसके थ्रू मुझे क्या पता चल रहा है कि अभी जो है क्लास चल रहा है. अभी अगर मैं एक फोटो दे दूं जहां पे लेट इट बी अ सिनारियो, ठीक है, एक सी बीच है, वो उसका इमेज तुमको दे दूं, तुम लोगों के सामने डिस्प्ले करो, ठीक है, तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि वो जो इमेज है पर्टिकुलर एक सी बीच को डिनोट करता है, जहां पे सी वाटर होगा, सैंड होगा, दैट इज सिग्नल. समथिंग विच आर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट थ्रू ऑडियो और वीडियो, दैट इज और विजुअल, दैट इज नथिंग बट अ सिग्नल. तो इमेज इटसेल्फ इज अ सिग्नल, कि इमेज के थ्रू हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, जैसे तुम अगर एक ये बुक का इमेज भेजू तुम लोगों को, तो बुक के इमेज से तुम लोगों को क्या पता चलेगा, बुक में कौन सा कंटेंट हो सकता है. बुक का फ्रंट पेज के इमेज से तुमको क्या पता चलेगा, दैट इज राइटर का नाम क्या है. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. Just give me a sec. Just give me a sec. I'm just going to give you an example to okay. I'm going to switch the window, and whatever I will ask, you just answer and you will get understood. Just a minute. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, in my right hand side, whereas my cursor is moving, this is an image. Yes or no? Yes, sir. You can Yes, sir. only visualize this. ये तुमको बोलेगा नहीं या ऑडियो सिग्नल जनरेट नहीं करेगा. यू कैन विजुअलाइज दिस, और आई कैन से दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नाउ फ्रॉम दैट इमेज तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक एक करके बताओ. फ्रॉम दैट इमेज, ये जो मेरा कर्सर जहां पे मूव कर रहा हूं, दैट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एक बुक का फ्रंट पेज है. इस इमेज में तुमको दिखा रहा हूं, ये इमेज को देख के तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है थ्रू दैट इमेज.
ये इमेज को देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है? डायमेंशन, कलर, हाँ, नेक्स्ट Okay, again I am saying whenever I will ask any question, think simply. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना. देखो, ये तुम कॉम्प्लेक्स करके सोचे हो, ठीक है, इसीलिए तुमको डायमेंशन तुम्हारे दिमाग में आया. कलर इज अ वैलिड पॉइंट. ठीक है. नाउ अगर मैं सिंपली सोचता हूं, अगर मुझे ये सवाल पूछा जाए कि इमेज को, ये इमेज क्या सिग्निफाई करता है, तो आई विल से सिंपली दैट इज द इमेज. From that image I will get the information regarding name of the book, title of the book. के ये जो इमेज है ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का बुक का इमेज है. इसको लिखने वाले 2 राइटर है. ठीक है, ये पब्लिकेशन दिया गया है एंड द बुक इज ब्लू इन कलर हैविंग येलो बॉर्डर इन द अपर साइड. ठीक है. So that is what we will get from an image. Now again I am giving another example. Okay, through this image, ये इमेज दिखाई दे रहा है. थ्रू दिस इमेज, ये इमेज को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, बोलो. सिंपली थिंक करना. ठीक है, ये नहीं कॉम्प्लेक्सिटी मत करो. ठीक है, कि बोल मत देना कि बादल में कितना अमाउंट बारिश हो सकता है, ये भी इमेज से पता चलता है. ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल थिंकिंग, एकदम नॉन टेक्निकल स्टूडेंट की तरह सोचो तो देखोगे तुम्हारा आंसर सही होगा या सिंपल आंसर होगा, विच इज द एप्रोप्रिएट वन. बोलो, ये इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा है? सर पहाड़, बादल और बर्फ दिख रहा है. हाँ, एंड in background the sky is blue, that means clear sky, the mountain having snow and some clouds are surrounded around the mountain. So this all information I am getting from that image. So now I am again switch to the classroom or switch to the slide. Just give me a second. So from the both images, I got 2 different information. From the first image, the first image signifies the name of the book, the author of the book, publication of the book, and the color of the book. And the second image, from there, we are going to find out. We found something like mountains. It is surrounded by snow and clouds. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपका आवाज बीच बीच में ना कट कट के आ रहा है. अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. ठीक है. तो जो इमेज, दोनों इमेज, 2 images signifies 2 different information. First one signifies the information related to the book. Second one signifies the information related to the nature or mountain. Okay, so I can say every image signifies something. So from every image I will get some information, and the information is nothing but the signal. कोई भी information क्या होगा? Meaningful signal is the information. So information, I can say any information is the part of the signal. So I can say image is the pictorial representation of the signal. Image is the pictorial representation of signal. Now अगर इमेज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल है तो मुझे पता है पिक्टोरियल. हाँ हेलो बोलो सर. आवाज कट. एक मिनट, आवाज कट रहा है सर. एक मिनट रुको. जस्ट a minute. Okay, I am just disconnecting myself, but you don't leave the classroom. Okay, I will rejoin.
Okay, am I clearly audible right now? Am I clearly audible right now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So if the image is nothing but the pictorial representation of signal, so the terms pictorial representation and signal has to be known very clearly to us. So pictorial representation means it can be visible, but not audible. ठीक है? And signal. So can anyone tell me what do you mean by signal? Because this is the very basic thing and you have to know before going to the further topic or before entering to the image processing topic. So any idea about signal? What do you mean by signal? What we will do with signal and how the signal will come? बोलो सिग्नल क्या होता है? Sir, signal is come from transferring data from one place to another place. Okay, transferring data. Somehow right, but this is not the exact definition. There are two types of signal, analog and digital. These are the types of the signal, not definition of or not Yes. the meaning of the signal. Okay, anything which can be represented is known as signal. देखो हर एक चीज अगर मैं ये जो बर्ड्स आर चार्पिंग आउटसाइड योर हाउस, ठीक है? सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द वॉइस and you are just hearing the voice of the chirping of the birds. So this is a signal. Okay, fan is rotating, okay, or the fan is working above your head. So the representation way of representation is flow of air. So you feel the flow of air so that you can say that yes, the fan is in active situation. The light is switch on, light is glowing. So through visual representation, so anything which can be represented is known as signal. Representation is two type. One is visual representation and audio representation, and one more representation is nothing but the combination of two these, that is audio visual representation. So now मुझे पता चला है सिग्नल क्या है. किसी भी चीज को तुम फोटो में कोई भी चीज का फोटो क्लिक करो, योर फोटो विल बी प्रोसेस्ड. यू कैन टेक द फोटो. ये नहीं कि जो कैमरा सिर्फ माउंटेन का ही फोटो उठाएगा, ठीक है, समुद्र का फोटो नहीं उठाएगा, रास्ते का फोटो उठाएगा, घास का फोटो नहीं उठाएगा. हर एक कैमरा में तुम कोई भी चीज का फोटो उठा सकते हो, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है. सो दैट इज सिग्नल. नाउ as you told, signal can be classified into two ways, that is analog and digital. Now since image is nothing but a signal, that is pictorial representation of the signal, so image can also be classified into two categories. One is analog image and one is digital image. So can anyone tell me what do you mean by analog image, or have you ever seen any analog image or digital image? Have you ever seen? कभी देखो एनालॉग इमेज और डिजिटल इमेज को? Yes or no?
Okay, how many of you have seen analog and digital image? Raise your hand. How many of you have seen analog image and digital image? Raise your hand. Am I audible now? Am I audible to you? Hello? Hello, am I audible? Am I audible? या कनेक्शन कट गया था? Hello, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, so I have asked a question to you. Okay, so if you have ever seen any analog or digital image, then raise your hand. And one more thing, please be interactive in my class. Otherwise, I will not continue to take your class. ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, हो सकता है नेट का इश्यू हो, सो यू हैव टू इन्फॉर्म मी. अदरवाइज बी इंटरेक्टिव इन माय क्लास. मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आएगा, तभी तुम्हारे सवाल का आंसर मैं दूंगा. ओके, सो आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन. इफ एनीवन हैज seen any analog or digital image, raise your hand. If not, okay, अगर तुम जिंदगी में कभी भी एक एनालॉग या डिजिटल इमेज नहीं देखे हो तो रेज योर हैंड. अगर नहीं देखे हो तो रेज योर हैंड, so that I can assume that all of you have seen analog and digital image. Okay, tell me, what do you mean by analog image and what do you mean by digital image? What do you mean by analog image and what do you mean by digital image? होता क्या है, एनालॉग इमेज क्या होता है और डिजिटल इमेज क्या होता है? एनालॉग इमेज क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या होता है? बोलो. बोलो. सर ये बस वे ऑफ रिप्रेजेंट, मतलब ये सर रिप्रेजेंट करने का बस ये टर्म है सर. कुछ हो सर, वो तो सारा ही. थिंक सिंपली.
सीएससी डिपार्टमेंट हो इसका मतलब ये नहीं है हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके कोडिंग में प्रोग्रामिंग के अंदर डाल के उसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सिंपल थिंकिंग। देखो, आज से 10-15 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, सबके घर में कैमरा है, आई थिंक है, सबके घर में है, जो रील वाला कैमरा, फूजी फिल्म का एक रील वाला कैमरा मिलता था, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, वहां sir. से फोटो क्लिक होता था और वो रील में कैप्चर्ड होता था। नाउ व्हेन वी विल गोइंग टू डेवलप द रील, क्या होता था, पूरा प्रोसेस जो होता था मैनुअली होता था, कोई ऑटोमेटिक नहीं होता था, या कहीं पे कोई डिवाइस हम मेरा इंटरेक्शन नहीं होता था। तो वहां पे रील को डेवलप किया जाता था, इमेज बनता था, फिर उस इमेज को हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ एल्बम्स हम लोगों को मिलता है। घर में सभी के पास एल्बम्स है, ठीक है। सो डोंट से कि मैंने कभी एनालॉग इमेज देखा नहीं है। तो अभी जाओ देखो, जो फोटोग्राफी है, जो इमेज कैप्चरिंग है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज है, उसको हम लोग एनालॉग ही करते थे। लाइक एक रील होता था, मैनुअली उसको डेवलप करते थे, एंड आई कैन टच दैट सिग्नल। फोटो को तुम टच कर सकते हो, फोटो को खुद के हाथ से टच कर सकते हो, कहीं पे रख सकते हो। बट इन द केस ऑफ डिजिटल वन, सबके पास मोबाइल फोन है, ऑब्वियसली है, दैट इज कोई दो राय नहीं है। मोबाइल फोन में हम लोग सब कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे सेल्फी खींचते हैं, ऑब्वियसली खींचते हैं, ठीक है। तो नाउ ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, ये डेवलप होने के लिए मुझे कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मोबाइल फोन खुद कैमरा से कैप्चर करता है, एंड थ्रू इज डिस्प्ले यू इट विल शो द image to you, and you can use that image virtually. Obviously you can't touch that image, तुम उस इमेज को टच नहीं कर सकते हो, उसको अलग से लैमिनेट कट नहीं कर सकते हो, फ्रेम नहीं कर सकते हो, उसको अलग से किसी जगह पे डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। यू कैन पोस्ट दैट इमेज इन सोशल मीडिया, यू कैन पोस्ट दैट इमेज इन वर्चुअल वर्ल्ड। सो that is digital, that means to develop the image and to post the image and to transfer the image from one point to another point, we will use digital device, that is your mobile phone, laptop, tablet, got it, digital camera, ठीक है। नाउ इफ दैट डिजिटल इमेज कैन बी डेवलप्ड बाय प्रिंटिंग, एक प्रिंटर के थ्रू उसको ये प्रिंट आउट करते हो, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग में, ठीक है। और तुम्हारा जो पुराने घर का पुराने एल्बम में जो पुराने तुम्हारा तुम लोगों के बचपन का फोटो है, उसको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बचपन का फोटो, उस टाइम में तो डिजिटल कैमरा था नहीं या डिजिटल डिवाइस था नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो एल्बम से वो फोटो को निकालते हैं, अपना मोबाइल से क्लिक करते हैं और फेसबुक में पोस्ट करते हैं। सो दैट इज द एनालॉग इमेज टू डिजिटल इमेज कन्वर्शन। आई थिंक समझा पाया हूं, तुम लोगों को समझ में आया एनालॉग इमेज क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या होता है? समझ में आया? Are you getting my point? If you have any doubts, don't raise your hand. If you understood whatever I have told, raise your hand. अगर समझ में आया तो हाथ रेज करो, अदरवाइज डोंट रेज योर हैंड। अगर समझ में आया जो मैंने कहा अभी तक शुरू से, अगर समझ में आया तो हैंड रेज करो, अदरवाइज डोंट रेज योर हैंड। Am I audible? Am I audible to you?
Am I audible to you? Okay, fine. That much for today. And regarding your interaction, I have to talk to your HOD and then I will take your class. Okay, I am going to conclude my class. Thank you all.